डी से डॉन भी हुए, डी से देवदास भी हुए, अभी डी से दिलवाले भी आ चुकी है। आपके हिसाब से, आपको लोग दिलवाला कहते हैं, आपके हिसाब से कौन होता है दिलवाला आपके हिसाब से? हमारी फिल्म का भी वही मीनिंग है एक्चुअली, यू नो, वंस हु कैन फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन, एंड होल्ड नहीं करते, एरोगेंस नहीं रखते, ईगो नहीं, तो गलत हो गया यार, मैं तो सब कुछ हुई है, बट people who have large hearts are the people who can forgive, forget and move on and love each other. I think that's as simple as that. How many references to Dilwale Dulhania Le Jayenge are there in this film? यही है रेफरेंस जो है, इससे बड़ा रेफरेंस और क्या हो सकता है? Because Chennai Express, your last collaboration with Mr. Rohit Shetty, उसमें भी there was a sequence where you were, you know, bringing those goons on board the train, and आपने कहा कि ये मैं पहले कर चुका हूँ, and you know, similar kind of scenes or dialogues in this film as well for the fans who would want to kind of see. Actually, you know, it's very first, Kajol, me feel very honored. Director of Rohit's caliber, one of his favorite films is Dilwale, and to say it again that one of the favoriteest directors that Aditya Chopra has, who's made Dilwale, is Rohit Shetty. So it's a strange kind of a mutual admiration without them actually meeting each other or talking about each other. तो वो दोनों इतनी, मैं जब भी अलग अलग वक्त पे दोनों को मिलता हूँ तो एक दूसरे की इतनी तारीफ करते हैं, just for the work each has done. I think that respectability and respect for work. So somewhere down the line, I think just for the fun element, we had it in Chennai. और इसमें तो हम ही हैं यार, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, कौन सा रेफरेंस हो सकता है? And then we took it seriously in Dilwale. Yeah. Shahrukh, with every film you raise the bar, and recently Varun said that this film will make Indians proud at the global level. What do you have to say on that? Actually, as a part of Red Chillies, I mean, I'll just talk about Red Chillies and Rohit Shetty Productions. Raising of the bar is by the creative team. Rohit's team, actually, you know, who's always behind the scene, and Red Chillies team, who are helping to take the vision a little further than what we have. And inshallah, I don't know, film jab aayegi, humne koshish bahut ki कि it has elements of what an international quality film should look like, with a family feel, the heart of Indians. It's actually a family happy comic film coming on the right time. But beyond that, everything else in terms of the technology and the technique of the film, sound, everything should be international. I think that credit goes to Rohit. So हमने कोशिश की है, और inshallah it'll always be a step up from the last film. You're known to be a marketing guru. With every new movie, you have come up with new promotion strategy and new tie-ups. Can you tell us something about the promotion? What new tie-ups can we see? ये थोड़ा मिसनोमर है यार, मुझे मार्केटिंग का इतना मालूम नहीं. हमारी टीम है, मनीष, करुणा और रेड चिलीज़ की, तो वही लोग करते हैं जो करते हैं. मैं जैसे फिल्म का श्रेय मैं सारा का सारा ले जाता हूँ जब वो हिट हो जाती है, वैसे मार्केटिंग का भी मैं ले जाता हूँ. सो देयर इज़ नथिंग दैट वी डू. हमारी जो फिल्म की बिलीफ होती है, जो फीलिंग होती है, दैट्स व्हाट वी पुट फोर्थ टू द ऑडियंस. दिस, लाइक आई सेड, फैमिली फिल्म है, एक हैप्पी फैमिली फिल्म है, खुशगवार फिल्म है. सो वी विल जस्ट टेल पीपल टू इन्फॉर्म एवरीवन कि इसमें जो है खुशी होगी, और एक ड्रामा है इस फिल्म के अंदर, एक यू नो, इश्यूज बिटवीन a family and a lot of comedy, as you would have noticed. So all that is going to be is what we just go and tell people. मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केटिंग का मतलब यह है कि लोगों को हम इन्फॉर्म कर दें कि हमारी फिल्म किस बारे में है, क्योंकि इतना महंगा टिकट लेकर आ रहे हैं, उन्हें पहले मालूम होना चाहिए. Beyond that, there is nothing special. Tonight is special कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, फैंस आए हुए हैं फिल्म देखने के लिए. एंड जब भी हम कोई बड़ा इवेंट करते हैं, जैसे ये है, या जब भी करेंगे इंशाल्लाह, the idea is we are celebrating the release of a film. Actually, we're doing nothing more special than that. And if any credit has to go, then it has to go to the marketing team which puts the law up. मुझे आइडिया बोलते हैं, हम कहते हैं हम पहुंच जाएंगे, हम अपना ब्लैक सूट पहन के पहुंच जाते हैं. What was your kids' reaction that you guys are coming back together after a long time? How excited are they to see you? No, and Abram का reaction. अब्राम, हमने रोहित ने हमको एक रात को सबको, सारी टीम को बुला के, रोहित ऐसा करते हैं, पूरी टीम 220 पीपल, वी सिट डाउन. जब हम रैप करने वाले होते हैं यहाँ की पूरी फिल्म जितनी एडिट हो गई होती, तो रोहित ने रात को फिल्म दिखाते हैं. तो उस वक्त अब्राम भी हैदराबाद में था. एंड एक दो जगह पे जो रोहित बता रहे थे बहुत सीरियसली और जेन्युइनली कि बहुत मुश्किल होते हैं स्टंट्स. ऑब्वियसली मैंने नहीं किया है, लेकिन उस स्टंट के अंदर एंड में थोड़ी सी चोट मुझको लगती है. और तो वो ही थॉट इट्स बिकॉज ऑफ काजोल, बिकॉज वो भी उस सीन में है. तो वो इसको देख कर कह रहा पापा टूट गया, पापा टूट गया. तो ही वॉज वेरी डिस्टर्ब विद हर. तो उसका मुझे मालूम है, उसको ये जो हमारा मिलन है उसको ठीक नहीं लग रहा है. उसको लग रहा है अगर काजोल के साथ आएगा तो बाप टूट जाएगा. लेकिन पिक्चर अच्छी लगी उसकी.
Sir, you know, in the trailer we get to see two looks. Like one is the clean shaven, and another is this. And in the past, the writers have said that in this film you will be seen in an angry young man look, just like Amitabh Bachchan in the 80s. And the audiences will whistle to the sequences in which you are doing action. So could you say something about that? I don't know यार. Actually yeah, the film is based in 2 time zones. मगर linear नहीं है picture. ऐसा नहीं है कि शुरू होती है और आखिर तक एक time span आता है. It has the technique writers ने और रोहित ने जो technique use की है, साजिद फरहाद और रोहित ने की, it keeps coming in going out. So अब रोहित की फिल्म है और रोहित मुझे बहुत सालों से माचो बनाने की कोशिश कर रहा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म के अंदर मेरा कुछ माचो ठीक हो गया. सो देर आर मोमेंट्स लाइक दैट एंड लाइक आई सेड दिस लॉट ऑफ एक्शन. बट अगेन मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि एक बड़ी ही खूबसूरत फैमिली टाइप एंटरटेनर है और उसके बीच में हर चीज़ है. आई मीन मैं ऐसा नहीं कि किसी को पॉइंट करूँगा. बहुत सारा सेक्सीनेस है जैसे बॉमन साहब हैं. Comedy है, there's a lot of actually there's a lot of drama and emotion in the film, and of course everything else that a person would like to see in 2.5 hours of entertainment. So उसके अंदर action भी है और बहुत बड़ी बात बोल दी. I don't think मैं अमित जी जैसा angry young man हूँगा. मेरा एंगल ऐसे ही छोटा मोटा सा है, वांखड़े तक, इतना बड़ा नहीं जाता मेरा. Doing stunt is really a terrible job. What Not a terrible job. It's a difficult it's job. a difficult it's a lovely study. job, but a difficult one. Difficult job. What safety measures do you all take? I mean, it must be It's quite a long different process. nowadays. It's a long process. मतलब मैं कैसे explain करूँ? It takes a lot of time, training. Can I just put in a little bit that I mean I'm sure Shahrukh would agree with me on that we've done a lot of films and safety measures have changed from what they were earlier to what they are today. Are completely different. We are much more safe as people, much safer as stars. And I have to say one of the safest sets that we've been on has been under Rohit's direction. I'll add to that actually. मैं चेन्नई की शूटिंग कर रहा था और मेरा shoulder actually broken था. I went into a surgery and we shot 12 days. All his fighters, his team, you know, when he talks about the team of action directors that he has and the boys and girls who work on it, they are extremely safe. मुझको एक बार भी, हालांकि मुझे लगता नहीं जितना एक्शन इस फिल्म में मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया है. इसमें कुछ 7, 8, 9 एक्शन सीक्वेंसेस हैं and we all know it. And whichever set you go on, you hear reports that Shahrukh has hit his shoulder or hurt his knee or something like that. So he's not managed that on this film at least. Not at all. And even the cast stunts that Rohit talks about, actually वो सारी extreme safety करने के बावजूद भी I know that how difficult, because कोई भी एक छोटी सी चीज़ भी गलत हो सकती है और होती है और दुनिया भर में होती है, सिर्फ यहीं पे नहीं. But I think his team is the safest team that whatever little experience I have of action. Personally, I've never been hurt a little. मुझे काजल ने ज़्यादा मारा है, रोहित ने कम मारा है. And genuinely, it's one of the most fantastic teams, and his other teams which he joins in and makes the whole group, I think it's one of the most safe teams to do action. You feel encouraged. कि जब ये 10-20 गाड़ियाँ उड़ रही हैं, ऐसा हम बात नॉर्मली करते हैं उसकी, बट व्हेन ही इज डूइंग इट वी नो वेरी क्लियरली दैट वी आर इन एन इंटरनेशनल boundary or a different country and we are as good as anyone else in the world. So I think kudos to him. I want to just add one thing in this, that this is the first time I'm doing action, so I was a little nervous to do this type of action and stuff, and I was supposed to do a flip off a table, and I was very enthusiastic about it, so I told Rohit, so that मैं कर लूँगा, I'll do it, and he said no, I won't let you do it, just put the padding, I won't take the shot only, so why are you arguing? So I put the padding, I said मैं कर ही लूँगा, I was being confident, and I did hurt myself. No, and he's very good. Even in the romantic song, he said, put the padding. If you see in the last few years, you're the only superstar who's done so many ensemble films, and Varun has said that you're the best co-star ever. Do you somewhere veer towards such films because you're secure as an individual in reality as well? Absolutely. Film की कहानी अच्छी होनी चाहिए यार. I mean, a lot of people ask me, and I'm not in any which way talking about Kajol or Preeti and the co-actors. I think an actor should do a film because of the director and no other reason. कि ये फिल्म जो है इस डायरेक्टर को बनानी है और ये चाहते हैं कि मैं इस फिल्म में हूँ, इसमें भाग लूँ. Otherwise, there's no point doing it. You know, because आप उस हीरोइन के साथ काम नहीं कर रहे, इसके साथ काम नहीं कर रहे. I have never worked with a heroine. We then make a film with the director as the captain of the ship. So अगर उसके साथ confidence है and उसके साथ belief है, whatever story, you know, when Rohit has 3 stories for me, and he said ये कर लेते हैं सर पहले after Chennai, and it's his belief. मैं कुछ भी कर लूँ, अगर मैं रोहित के belief के विपरीत करूँगा तो फिल्म अच्छी नहीं बनेगी. So I've always believed जिस डायरेक्टर को जो फिल्म बनानी है और अगर मुझे वो उस फिल्म के लिए चूज़ करते हैं, then मेरा वो it's my duty
to just follow it through. It doesn't make a difference. अभी fan आ रही है, fan में कोई और है ही नहीं, मैं ही हूँ बस. You know, some other film will come. So it depends. If you are happy doing a film with the director, whatever the cast, however you want. And having said that, I don't think after working for 25 years, I really need to worry with the cast and crew which loves me so much. In 99 or 100% of the films that I worked in 25 years, they call me Shah Bhai and give me so much love that I have to worry ki X is better, Y is better. I wish, and honestly, in my 25 years, as I stand here, I would like to say this without sounding immodest or any other way. I really wish everybody is better than me in the film and take me along and make me look good. So I really hope even this film does the same. I actually want to add to this. He is, in reality, the most secure actor ever. He is someone who जो दूसरों को अपने से आगे रखते हैं. And that's what he's been doing throughout the film. In everything, he wants all of us to be a part of it. He wants us to be seen more, do things. And he has always been encouraging us. And that is the quality of a secure actor. Did the ladies get to do any action? You're still stuck with that question, na? Yeah, they've done a lot of action, especially Kriti, who's been hitting me, and Chucha, and everyone over here. And no, but just to add to what she said, he's honestly, I think he's actually a rock star. He's one of the coolest people I've got to work with. And he's actually the youngest actor on this set because he's always on the go. He doesn't let us sleep. He keeps saying कि तुम लोग क्या कर रहे हो यार? You're like young, क्या कर रहे हो? तुम्हारे उम्र में तुम लोगों को पता नहीं मैं क्या क्या कर रहा था. Live life, enjoy. He's one producer who doesn't let his actors sleep. सब कुछ मत बताना मैं क्या Sorry, कह sorry. रहा हूँ. It's only for me. But और उसका जवाब तो दे दो. Yes, they do action in the film. वो बेचारी तड़प गई है. Do ladies have any action in? Do ladies have any? Yes, they do. काजल का बड़ा अच्छा एक्शन सीन है जॉनी भाई के साथ. Shahrukh, last night you dub smashed to Prem Ratan Dhan Payo song, and so did Salman did to Dilwale. Was it impromptu that you all decided to just dedicate a song? Yeah, actually, I think they were all sitting at home and Salman called me and he said, क्या कर रहा है तू? I said, हमारा भी रैप हो, actually हमारी फिल्म रैप हो गई थी रात को, तो हम लोग सब डिनर कर रहे थे ऐसे ही we said we'll just because रोहित हमको काम कराते रहते हैं, पार्टी नहीं करने देते हैं, so आखिरी दिन हमको मौका मिलता है जब हम इसको पूरा मिसयूज़ कर सकते हैं और रोहित को जगा कर रख सकते हैं और हमारा एक्सक्यूज़ ये होता है कि सुबह जो है हम ड्राइव करने की हालत में तुम हमको लेकर जाओगे तो तुम्हें हमारे साथ पार्टी पे रहना पड़ेगा. तो दिस इज द बेस्ट एक्सक्यूज विद रोहित बिकॉज डजंट पार्टी एट ऑल. सो सलमान कॉल्ड एंड ही सेड यार तेरा पोस्टर रिलीज हो रहा है, सो आई लाइक टू डू समथिंग फॉर यू एंड काजोल एंड वी लाइक टू डू द सॉन्ग व्हिच प्रीतम दा हैज डन. सो आई सेड वो गाना अभी तो रिलीज ही नहीं हुआ है, अभी डब स्मैश नहीं कर सकते. सो देन ही पुट दैट एंड वी वर ऑल टुगेदर. सो वी जस्ट डांस टू प्रेम रतन धन पायो and it was good fun. I think it was very enjoyable, but it was just impromptu. He just called in the night and I'd missed the call, then he called and then we called back and said चलो हम हमसे पहले करते हैं. So it was a competition, कौन पहले करेगा वो जीत गए 1 मिनट से.